بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. This is Muhammad Umar Haroon from American Lycetuf. My dear students, I hope you all will be speak and span by the grace of Allah in this pandemic situation. Please stay at home and be safe and take all the precautionary measures. My dear students, today I'll give you the lecture on chapter number 3, class 9th, media and its impact. Media और उसका असर. Basically, if we'll talk about the media, so today media is a reflection of our society and it depicts what and how society works. Media, either it is printed or electronic or the web as well, are not only the medium which helps in making people informed, but also help in entertaining the public, educate and make people aware of the current happenings, what is going on in the whole world. Media has today become the mouthpiece of downtrodden. It has become the voice of our society. It is a variety of media platform that has stimulated the thoughts of the young generation and other section of our society more eloquently. So dear students, we can say that media influences so many people's behavior nowadays, and information can be spread after a few clicks of a button, whether it is true or false, speculation or gossips. This can affect relationship in various ways, be it between celebrities and ordinary people, or between celebrities themselves and their loved ones. So the media can manipulate, influence, or persuade or pressurize society, along with the, even controlling the word at times in both positive and negative ways as well, mentally, physically and emotionally. So let me start. By the end of this unit, students, you will be able to know that the role and the impact of media on society, and the use of colons, conduct and write an interview, illustrate use of pronouns, and as we have learned earlier, identify subject verb agreement, and read and write emails as well. If we talk about the pre-reading, so how does media bring people closer? We must know that how does media bring people closer. So in this chapter you will know the difference between electronic media and print media. So do you like reading newspaper? If you like reading newspaper, so which is your favorite newspaper? As I have said that there are two major means of communication, print media and electronic media. So let's start a translation of this chapter. Miss Aisha is the favorite teacher of class 9th. उस्तानी आयशा, मिस आयशा नहम जमात की पसंदीदा उस्ताद हैं. मिस आयशा एंटर्स, उस्तानी आयशा या मुअल्लिमा आयशा या मिस आयशा, कुछ भी लिखा जा सकता है. एंटर्स दाखिल होती हैं. एंटर्स नाउन के साथ जब ये हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ एस का यूज़ किया गया है, इट्स मीन कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस. मिस आयशा एंटर्स, मिस आयशा दाखिल होती हैं द क्लासरूम, कमरा जमात में, विद हर यूजुअल स्माइल, अपनी अमूमी मुस्कुराहट के साथ. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को सलाम करती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाजिरी लगाती हैं या हाजिरी लेती हैं. मिस आयशा अपने मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं, तलबा को सलाम करती हैं और हाजिरी लगाती हैं या रोल कॉल करती हैं. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, ये उनका मुबाहिसे का दिन है. द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तमाम तलबा तैयार हैं.
They know what is about to come. वो जानते हैं कि क्या होने वाला है या क्या अभी होना है. And they are prepared for it. वो इसके लिए तैयार हैं. Shall we start? She asked politely. Shall we start? क्या हम इसका आगाज करें? She asked politely. उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ, शुफ्तगी के साथ पूछा. Yes, the students nod. तो तलबा ने सर हाँ में हिला दिया. जी हाँ, तलबा ने सर हिला दिया. टीचर, उस्तानी, मुअल्लिमा, उस्ताजा, ये तमाम अल्फाज यूज किए जा सकते हैं. ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर. ओके, अच्छा, ठीक है. एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हम पहले फैसला कर चुके हैं. द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. कि आज के बहस के लिए जो उन्वान है या आज का मौजूए बहस मीडिया का किरदार और उसका असर है. अब इसको रवानी में हम जैसे पढ़ेंगे. ठीक है, जैसा कि हमने पहले फैसला किया है, आज की बहस का मौजू या आज का मौजूए बहस मीडिया का किरदार और उसका असर है. टू स्टार्ट विद, इसके साथ आगाज करेंगे. लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वाजे कर देने दीजिए, मुझे साफ साफ बता देने दीजिए दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कि मीडिया एक ताकतवर तरीन, एक सबसे ज्यादा ताकतवर जरिया है, या ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये मवासलात का जरिया है या मवासलात का सबब है या तरीका है. तो दोबारा इसको रिपीट करेंगे. मैं वाज़े तौर पर यह बताती चलूं कि मीडिया मवासलात का सबसे ताकतवर तरीका है या जरिया है. इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल. ये लोगों के साथ खबरों और मालूमात को शेयर करते हैं या फैलाता है. समटाइम्स, बसा औकात, बाज़ औकात, मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़. मीडिया झूठी खबरें फैलाता है. बट लेकिन जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस. लेकिन अमूमन या आम तौर पर ये हमें हमारे इर्द गिर्द के हालात से आगाह करता है, हकायक से आगाह करता है. कभी कभी मीडिया गलत खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये हमें अपने आसपास के हकायक से आगाह करता है. डू यू एग्री? क्या आप इत्तेफाक करते हैं? क्या आप इस पर इत्तेफाक करते हैं? स्टूडेंट्स, यस वी डू. तलबा, हाँ हम करते हैं, हाँ हम इससे इत्तेफाक करते हैं. स्टूडेंट 1, पहला तालिब इल्म, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट. मैं इसमें कुछ और इजाफा करना चाहता हूं. मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा करना चाहता हूं. टीचर, यस श्योर, हाँ जरूर. उस्तानी, हाँ जरूर. स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड. मीडिया हेल्प्स पीपल, लोगों की मदद करता है, टू शेयर नॉलेज, मालूमात या इल्म को फैलाने में, ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के. मीडिया लोगों को दुनिया के इल्म बांटने में मदद करता है. Their feelings and opinions are expressed through it. Their feelings, उनके जज्बात, and opinions, और आरा, राय की जमा आरा, opinions आरा, are expressed, वो उनका इजहार किया जाता है, through it, इसके जरिए से. यानी उनके जज्बात और आरा का इजहार इसके जरिए से किया जाता है. मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस. मीडिया अट्रैक्ट्स, मीडिया मबजूल करता है, अटेंशन, तवज्जो, ऑफ द वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़ी सामीन की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करता है. मबजूल यानी अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ कशिश करता है, रागिब करता है. मीडिया बहुत बड़े सामीन की तवज्जो अपनी जानिब रागिब करता है. हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा है, क्या आपने महसूस किया है,
that the first thing we do soon after entering the house. کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے, کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے, کیا آپ نے یہ محسوس کیا ہے that the first thing, کہ سب سے پہلا کام we do soon after entering the house, کہ ہم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں, is to switch on the television, کہ ہم اپنے ٹی وی کو آن کرتے ہیں یا ٹی وی کو چالو کرتے ہیں یا چلاتے ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. اسٹوڈنٹ 2 یعنی سیکنڈ اسٹوڈنٹ, لیٹ می سے دیٹ, مجھے یہ کہنا ہے کہ میڈیا ہیز بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف. میڈیا ہماری زندگیوں کا بنیادی جزو بن چکا ہے. میڈیا ہماری زندگیوں کا بنیادی جزو بن چکا ہے. اٹ ناٹ اونلی انفارمز اس بٹ آلسو انٹرٹینز اس. یہ نہ صرف ہمیں آگاہ کرتا ہے بلکہ ہمیں تفریح بھی مہیا کرتا ہے. ٹیچر استانی ایبسلیوٹلی رائٹ, بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. ویل اچھا یا ٹھیک. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دا ٹو میجر مینس آف کمیونیکیشن؟ کیا تمہیں یا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ کون سے دو بڑے ذرائع ہیں کمیونیکیشن, مواصلات کے؟ کیا آپ کو مواصلات کے دو بڑے ذرائع کے بارے میں کوئی اندازہ ہے, کوئی جانکاری ہے؟ اسٹوڈنٹ 3 طالب علم, جو تیسرا طالب علم ہے, دیر آر ٹو مینز آف کمیونیکیشن, دو ذرائع ہیں ابلاغ کے یا مواصلات کے. الیکٹرانک میڈیا یعنی برقی میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا, اور اشاعتی میڈیا. یعنی مواصلات کے دو ذرائع ہیں, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کو برقی میڈیا اور پرنٹ میڈیا کو اشاعتی میڈیا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شائع کیا جاتا ہے. The media includes film, radio, television, internet, books, magazines and newspapers. The media includes, میڈیا میں شامل ہوتی ہیں کون کون سی چیزیں؟ فلم, ریڈیو, ٹی وی, انٹرنیٹ, کتابیں, رسائل یعنی میگزینز, رسائل اینڈ نیوز پیپرز اور اخبارات. It provides us information as well as entertainment. یہ ہمیں مہیا کرتی ہے انفارمیشن یعنی آگاہی مہیا کرتی ہے, معلومات مہیا کرتی ہے, as well as entertainment, اور ہمیں محظوظ کرتی ہے, یہ ہمیں تفریح مہیا کرتی ہے. ٹیچر گڈ, اچھا ٹھیک ہے. اٹس تھرو میڈیا دیٹ دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. یہ میڈیا کی ہی بدولت ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, جسٹ بیکاز آف میڈیا. There is a coverage of all the important events of the world on television. There is a coverage. کیا کیا جاتا ہے؟ ہم میڈیا کے ذریعے سے there is a coverage, تمام all important events, تمام اہم جو واقعات ہیں ان کو کور کیا جاتا ہے یا ان کو نشر کیا جاتا ہے آف دا ورلڈ, پوری دنیا کے, آن ٹیلی ویژن, ٹی وی پر. We can have an easy access to all kind of information. We can have, ہم حاصل کر سکتے ہیں رسائی to all kinds of information, تمام طرح کی معلومات through media, میڈیا کے ذریعے سے. Student 4 طالب علم, چوتھا طالب علم, can we say that, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں the world is just a click away, کہ دنیا صرف ایک بٹن کے یعنی کلک بٹن کے فاصلے پر ہے؟ ٹیچر استانی maybe well, شاید ایسے ہی. would any other students like to say something on it, کیا کوئی اور طالب علم اس میں اس پر کچھ کہنا پسند کرے گا؟ Miss Aisha points to the students sitting at the end. Miss Aisha پیچھے بیٹھے ہوئے, آخر میں بیٹھے ہوئے طلباء کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہیں.
स्टूडेंट 5, पांचवा तलब इल्म, यस हाँ यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं. स्टूडेंट 6, छठा तालिब इल्म, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रॉडन. मीडिया जो है वो बेबस नादार जो लोग हैं उनकी आवाज़ बन चुका है. टीचर, यस वेल सेड, हाँ बिल्कुल ठीक कहा. उस्तानी, जी बिल्कुल ठीक कहा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. हाँ बिल्कुल ठीक कहा. ये कहना कतन गलत ना होगा. इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये बिल्कुल कहना गलत ना होगा दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट, के मीडिया सबसे ज़्यादा विजिलेंट, चौकन्ना, चौकस इदारा बन चुका है. दैट कीप्स एन आई, जो निगाह रखता है, नज़र रखता है ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, मुआशरे के हर पहलू पर, मुआशरे के हर पहलू पर कड़ी निगाह रखता है. थ्रू डिबेट्स, तकारीर के ज़रिए, रिपोर्ट्स के ज़रिए, एंड टॉक शोज और मुबाहिसे के जो प्रोग्राम हैं उनके ज़रिए, इट मेक्स एवरी वन आंसरेबल, यह तमाम को जवाबदेह बनाता है, एंड अकाउंटेबल, और यानी अकाउंटेबल भी जवाबदेह है, जिसके अंदर हम किसी की अकाउंटेबिलिटी करते हैं. दैट इज़ वाई मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. दैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि मीडिया हमारी ज़िंदगियों का लाजमी जुज़ बन चुका है. नाउ अब आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू, मैं आप में से एक को मदऊ करूँगी, दावत दूँगी टू सम अप डिस्कशन, कि वो इस मुबाहिसे को, इस गुफ्तगू को इख्तिताम पर लेकर जाए, या इसका खुलासा करे. स्टूडेंट 1, पहला तालिब इल्म, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन. मैं इस मुबाहिसे को या इस बहस को अंजाम तक यूँ पहुँचाता हूँ, या इसका यूँ इख्तिताम करता हूँ बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि मीडिया कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, मीडिया मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका तसीही असर हो सकता है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करता है. टीचर, उस्तानी, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा अखज़ किया. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि आप तमाम ने शमूलियत इख्तियार की इन दिस डिस्कशन, इस मुबाहिसे में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल, और ख़ुद को बहुत उम्दगी से बयान किया. द बेल रिंग्स, घंटी बजती है. मिस आयशा सेज गुड बाय, मिस आयशा अलविदा कहती हैं टू द क्लास, कमरा जमात को, एंड लीव्स, और बाहर चली जाती हैं. So dear students, that was the translation of this chapter number 3, media and its impact, in which you have learned that the theme of the complete lesson to highlight the role and impact of media, and it really tells that the media can mold an opinion and mindset of the people. It has a deep impact on lives of people. Media has turned the world into a global village. How can we say that? Let me explain. Dear students, media, like a media communication theorist, coined the term global village in 1964. He said that the phenomena of words culture shrinking and expanding at the same time due to pervasive technological advances that allow for instantaneous sharing of culture. This is called a global village, according to media communication theorist. I hope by the end of today's lecture, you will able to learn about the role of media in our society. I hope I have not left any stone unturned. आपने ये तमाम ट्रांसलेशन देख ली.
میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اس میں کوئی پرابلم ہوگی. So thank you so very much, my dear students, and don't forget to subscribe this channel. Thank you very much.